प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो हमारे बाल को एक रफ कर देते हैं, तो एक टाइप के लिए जल जाते हैं थोड़े। लेकिन अगर हम हेट यूज़ किए हुए हेयर को कर्ल करने वाले हैं, ओके, तो देखते हैं कैसा होता है एंड इसका इफेक्ट क्या होता है। ओके, सो अभी रात हुए हेयर दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। मैंने इसके लिए कुछ तीन जोड़ी सॉक्स लिया हुआ है, कुछ इस तरह। ओके, इसके थ्रू मैं अपने हेयर रात को टाई करके रखूँगी। हेयर को इसके थ्रू मैं अपने हेयर को टाई करके रखूँगी, जिससे इसका 190 पे देखते क्या रिजल्ट आता है। हम कल मॉर्निंग में इसका रिजल्ट देखते हैं। सोते हैं तो थोड़ा इसको पीछे साइड एडजस्ट कर लीजिए, बिकॉज आपको सोना है रात को एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसके हिसाब से आपका जो ये बना है उसके हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए आप। आपके पास है कर्लिंग ऑयल है तो प्लीज़ बिफोर ये डाई डाउन करने से पहले आप पहले वो यूज़ कर लीजिए, तो आपको अच्छा इफेक्ट इसका होगा। ओके, तो मैंने ऑलरेडी मेरे हेयर में एक्चुअली थोड़ा ऑयल था, इसके मैंने यूज़ नहीं किया इससे पहले। लेकिन इफ़ आप कहीं पर फंक्शन में जाना है, आपको कहीं जाना है, तो आप बेटर रहेगा कि आप वो टाइम पे हीट करके अपने बाल को हार्म पहुँचाएँ। एक 1 नाइट बिफोर ही आप इसको रात में ट्राई कर लीजिए ऐसे, एंड आपको मॉर्निंग में अच्छा लुक मिलेगा। ओके, सो गाइस गुड नाइट। कल इसका इफेक्ट अभी है, आज इसका रिजल्ट देखते हैं हम। ओके, ये पूरी रात मैंने इसको रखा है अपने हेयर वैसे करके, एंड ये सोने में बहुत प्रॉब्लम देता है। तो गाइस आप मेक श्योर कि आप जिस साइड सोते हो वैसा
इफ़ आप ऐसे सोते हो तो आप इसको थोड़ा ऊपर और इधर रखिए। ओके, अगर आप वन साइड सोते हो तो पोनी उसके हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए कि आपकी नींद खराब नहीं हो। ओके, अभी इसको ओपन करते थे, इससे क्या रिजल्ट बेस्ट वे है। अगर आपको कोई फंक्शन में जाना है, आपको पता है कि पहले आप इसको रात में ऐसे रख सकते हो। मैंने सिर्फ सॉस यूज किया हुआ था। ओके, तो इसमें आपको इसके लिए राउंड करके फ्राई करके रखना है। मॉर्निंग में आपको ऐसा ही रिजल्ट मिल रहा है। आपको बाल हीट करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारा हेयर हार्मफुल हो। ओके, एंड हमें और हेयर हीट करने में, कर्ल करने में बहुत टाइम जाते हैं। तो आपको सिर्फ ऐसे रात करके सो जाना है। मॉर्निंग आपको अच्छे रहेगा। वेरी इजी हैक हो गया। Very happy to see that. तो गाइस कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा है।